Hello, good morning, everybody, and welcome to my news portal, namely the OpenView. I would like to introduce that since more than 5 years now, this portal is working, operating in the Union Territory of Jammu and Kashmir, and we have have our own office at Shastri Nagar, Jammu. The purpose of starting this independent news portal, the OpenView, was to disseminate true information to the public at large. Which was otherwise not possible, as we all know that since 10 years the mainstream media has become the Godi media, and this media, mainstream media, electronic media particularly, and also the print media, they have stopped debating on the issues of public interest, the issues, critical issues, which needs to be addressed by the government and which needs to be debated by the mainstream media, has absolutely stopped. And what you find on the mainstream media, when you open up any channel in the evening or any time, you will see unnecessary, futile, useless debates on such channels, and shouting debates which has no any importance to the general public. So I would say that today, and since the mainstream media has become irrelevant to the public at large, therefore this social media has emerged as an alternative to the mainstream media. And now, since masses are fed up from the mainstream media, therefore there is a complete shift of the people of India, majority of the people of India, from the mainstream electronic media to the alternative social media. When I say social media, then I point towards the YouTube channels, Facebook, Instagram, Twitter, and many other such social media platforms. Now, I give you my own example that ever since the BJP government has taken over in India, I have stopped
watching electronic media, news channels. Rather, I'd like to watch BBC, Al Jazeera, and other channels which at least give you the information on international issues. So, keeping in view the such situation prevalent in our country, I started this news portal and news website. You can visit my website also, www.theopenview.in, and there you will find informative articles. You will find good content, news, which is at least based on some source, some truthfulness. And there is no any distorted version of any news. So you can visit the news website also, and live streaming we do on YouTube, our YouTube channel, from where at present I am broadcasting. The channel name is The Open View. If you visit to the YouTube page, you just write in the search The Open View and subscribe to it. So, and similarly on Facebook also, when you will go to our Facebook page, The Open View, you will find the content there also. On Twitter also, the same page name, The Open View. We are on Instagram also. The name of the page, the account is same, The Open View. So you can visit these platforms and you will find on all these platforms, you will find the content of The Open View. I tell you that we have no any wide publicity. We don't do it through any agency or any advertisement agency like others are doing. So we are free from such routes. We do everything on our own, whether it reaches to some people or to more people. I'm hardly concerned about it. What my concern is that I should convey what I observe in the society, in the economy, that we are doing. So my request to every viewer who will come to watch this, that kindly visit the YouTube channel, The Open View, Facebook page, The Open View, Instagram page, The Open View, Twitter page, Twitter account, The Open View, and find a content which you will really relish and appreciate. And above all, don't forget to subscribe to at least to this YouTube channel of The Open View, and we will try our best to disseminate the ideas which are informative, perceptive, and constructive for the society. And this is up to the viewer to analyze it objectively and subjectively, and to carry
forward such ideas to the next of you, so that some critical good opinion is formulated by the public. I hope you will definitely visit the channels which I have just explained to you. Now, the topic today, which I have kept for discussion, is on the upcoming elections in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Why I am emphasizing much, this is my third or fourth video on the elections in Jammu and Kashmir, just to make the elector aware that what is the value of this potent weapon, instrument of vote in your hand. Vote is conferred upon you by the Constitution of India. And you must understand that apart from your right, this is an instrument, a weapon which can guide the actions of your representative to whom you elect. If your representative becomes unruly, if he shirks from his obligations of being the elected representative of yours, you can easily correct him by using this instrument of vote in your hand. The only condition to utilize this instrument of vote is that you should have the analytic ability and a wise mind. Some education on this is mandatory, a requirement for every voter. This right of vote which Constitution has conferred upon you and which has been incorporated after wide deliberations by our forefathers, the framers of the Constitution. Perhaps they have thought, while incorporating this right to franchise, was that it could, the wise use of vote could keep the representatives, your representative within its bounds. If he deviates, if your representative aberrates
from his obligations of being the representative of the people's, being the people's representative, then the voter could correct him. But unfortunately, this instrument of vote is not being used wisely by our masses, irrespective of the fact whether the one is educated or the uneducated. It has no, I find no difference between the two. And you see that जब भी one thing which I want to make it very clear to you, my friends, is that the system of the pattern of vote, getting vote in our system is very bad. It is divisive system. Divisive system means that the representatives who jump in the fray of elections to contest elections, they divide the people to get your vote on castes. Say, for example, if you belong to A caste, the contestant, the candidate who is contesting the elections, his political party will try to woo, to butter you on the basis of, and the candidate also belongs to the A caste. Then he will try to get your vote on the basis of caste. That you belong to the same caste, you therefore, and other caste is not a good caste. If you cast your vote to other caste, that caste will dominate you, harm you, damage you. So dividing the people on caste basis, our candidates, our political parties ask for votes, which is absolutely unconstitutional, against the principles of the constitution. कि अगर आप कास्ट बेस्ड वोट लेते हो तो आप यू आर क्रिएटिंग ए वेज, एक डिफरेंस जो है, डिस्क्रिमिनेटरी डिफरेंस जो है, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, दैट पॉलिटिकल पार्टी इज ट्राइंग टू क्रिएट. तो इन चीज़ों से आपने बचना है. ये पैटर्न जो है बन चुका हुआ है हमारे मुल्क में. और ever since BJP has taken over the power of this country, reign of this country, we have seen now the things have gone further now. अब क्या हो रहा है, अब हिंदू और मुस्लिम में वेज क्रिएट करके, हेट्रेड क्रिएट करके
एक पॉलिटिकल पार्टी हिंदुओं के वोट की डिमांड करती है और दूसरी जो रिलीजियस जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ ये बात चलती है और एक कम्युनल जो एक हेट्रेड है और एक जो टेंशन है इससे वो क्रिएट होती है। तो बोथ demanding of votes on either on caste base or on religion base, both polarize the system of your society, the system of your community, and both are damaging, harmful, injurious to your society because both creates hatred among the masses. They become a dagger's run. And all these things which the political parties of any sort are doing is anti-constitution. Constitution does not permit such lines to be taken by the political parties just to create your vote bank, just to grab the power by creating an atmosphere of hatred in the society, in the country. This is impermissible by any norm, by your constitution. आपके संविधान ये परमिट नहीं करता है। तो आपने देखा होगा, you might have observed your political parties, your political candidates, your representatives, that they have forgotten the concept of elections. They have forgotten that what our forefathers who framed the Constitution, what they intended when they incorporate the power of vote in your constitution. Why the elections, the provisions of the system of elections was created? The system of elections was created not to polarize the society, but the system of elections were created to elect your governments, to elect your representatives, because this is indirect democracy. It is not direct democracy where people raise their hands and elect their representatives. It's a large country. It's a large country of huge population. So direct democratic system is not possible. Direct elections are not possible here. Therefore, an indirect system of elections was created, different on the pattern of constituencies, from where and to regulate this system, a body of election commission was created by the Constitution so that your elections could be regulated. And free, fair, and fearless elections are held
under the supervision of the Election Commission of India. This is autonomous, independent body without any interference. Forcibly, we can't control the Election Commission because the Supreme Court, the system of courts is also there. If anything happens to the concept of the Constitution, then it is the duty of the Supreme Court, the High Courts, the court to guard the Constitution, because Supreme Court is the guardian of the Constitution. High courts are the guardians of the Constitution. तो इलेक्शंस का जो सिस्टम क्रिएट किया गया था वो इसीलिए क्रिएट किया गया था कि एक इतनी बड़ी जो डेमोक्रेसी है, यहाँ इतनी 1.40 बिलियन पीपल रहते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें। और क्यों चुन सकें? कि वो उनके जो राइट्स हैं, कौन से राइट्स? जो राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, संविधान ने दिए हैं, उनकी वो प्रोटेक्शन कर सकें और उनको वो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में उनको वो रिप्रेजेंट कर सकें, अपने एरियाज़ को रिप्रेजेंट कर सकें, उनके एरियाज़ में लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, एरियाज़ में कौन कौन से जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं वो नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, सड़कें बनवाएं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाएं। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उन सब का वो जो गार्डियन है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव का ये काम नहीं है कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाना और अपने लिए वोट बैंक बनाना, ये उसका काम नहीं है। उसका काम है कि आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके राइट्स की प्रोटेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं ज़्यादा इन्फ्लेशन तो नहीं है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वाई द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज आर नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय यू पीपल, बाय द गवर्नमेंट। मेरे लोग सफर कर रहे हैं। अगर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये रिप्रेजेंटेटिव ने देखना है और उसको रिप्रेजेंट करना है स्टेट असेंबलीज में, पार्लियामेंट में, कि वे मेरे एरियाज में ये प्रॉब्लम्स हैं and government is not addressing those problems. ये नहीं है कि एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से लड़ाना है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली दोनों तरफ से ये सोचना होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव आप चुन के भेजते हो वो कितना कैपेबल है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो आपके लिए क्या कर रहा है, आपके राइट्स की प्रोटेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें आपने देखनी है और इसको एनालाइज करना है विद योर एनालिटिक एबिलिटी। और अगर वो आपका रिप्रेजेंटेटिव आपसे वोट लेकर पावर में आकर जीत कर वो 5 साल आपको नज़र ही नहीं आता, तो फिर तो ये मतलब हुआ कि ये 5 साल तो वो निकाल जाएगा
फिर अगले 5 साल क्या होगा। तो जब अगला 5 साल आता है तो देखने में यही आया है कि वही कैंडिडेट जिसने आपके लिए कुछ नहीं किया वो फिर से री इलेक्ट हो जाता है। यू पीपल री इलेक्ट सच रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अगेन यू सफर। दिस इज व्हाट हैपन्स। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपकी एनालिटिक एबिलिटी जो है वो लैग करती है। आप यू फॉल ए प्रे, यू फॉल इन द ट्रैप। आप फिर उनके जाल में फंस जाते हो और वही कास्ट बेस्ड जो जाल बुन के रखा हुआ है आपके पॉलिटिकल लीडर्स ने, जो हिंदू मुस्लिम वाला जो जाल बुना हुआ है आपके पॉलिटिकल लीडर्स ने, आप उसमें फंस कर पोलराइज अपने आप को करके एक दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ, एक दूसरी कास्ट के खिलाफ, तो आप फिर वही गलती कमिट करते हो जो आपने पीछे की थी। तो फिर आप सफ़र करते हो। फिर 5 साल आपको याद आता है कि ये हमने इसको वोट दिया था तो ये तो गायब हो गया, ये तो कोई काम नहीं कर रहा, ये तो हाथ में नहीं आता। तो ये सिलसिला आप खुद ही जारी रखते हो। तो इस ट्रैप से आपको बाहर जो है निकलना होगा। जब तक आप इस ट्रैप से बाहर नहीं निकलते तब तक आपके साथ यही होता रहेगा। तो एक मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस जो हैं 18 से शुरू हो रहे हैं। आप लोगों ने वोट करने जाना है। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ आपके सामने आएगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बताई है अभी मैंने एक्सप्लेन की है कि आप कास्ट बेस्ड अपना वोट मत डालिए, आप धर्म के बेस के ऊपर अपना वोट मत डालिए। इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर वोट करना है तो आप अपने इश्यूज़ के ऊपर वोट डालिए। इश्यूज़ आपके क्या हैं? आपके जो इश्यूज़ हैं वो है जैसे राइट टू लाइफ एक आपका इशू है। राइट टू लाइफ क्या होती है? आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सबसे बड़ा राइट है आपका। ये राइट अगर एग्जिस्ट करता है तो आप एग्जिस्ट करते हो। अगर ये राइट आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो। तो राइट टू लाइफ क्या है? जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो आपकी लाइफ है वो डिग्निटी वाली होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए, रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए। वो कैसे होगी? वो तभी होगी जब आपको खाने को मिलेगा, जब आपको कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए, जब आपको शेल्टर मिलेगा, रहने के लिए कोई आपके साथ कोई आपके पास कोई बसेरा होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन होना चाहिए। आपका जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है जिसमें आपकी हेल्थ जो सेफ, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, उसमें आपकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। आपका वातावरण जो है वो क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि आप सांस ले सको। तो ये तो हो गया आपको। अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं तो हमारी इंसान की लाइफ तो एक जानवर के बराबर ही हो सकती है, वो तो डिग्निटी की लाइफ हो नहीं सकती। अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं, तो ये चीज़ें आपको किसने देनी है? ये ऑब्लिगेशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट जो गवर्नमेंट्स जो भी गवर्नमेंट्स बनती हैं उनके ऊपर डाली हुई है कि उनको लोगों के लिए, अपने जो लोग हैं मुल्क के सिटीजन्स हैं, उनके लिए ये सारे काम करने हैं। इस ऑब्लिगेशन से स्टेट जो है वो अपना मुंह मोड़ नहीं सकती, कैन नॉट डिविएट फ्रॉम दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
The government, any government is bound to follow these principles. और आपका इशू क्या हो सकता है? आपकी जो लिबर्टीज हैं, जो फ्रीडम्स हैं, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। तो ये लिबर्टीज जो हैं वो प्रिजर्व आपको करनी है। जो फ्रीडम्स जो हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस हैं, और देयर आर 5-6 लिबर्टीज विच हैज़ बीन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो गारंटीज जो हैं उस पर कोई ऑनस्लॉट नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट गारंटी है। अगर आप इफ यू स्टार्ट फेयरिंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, what it means the state is doing something with your liberty, doing some onslaught on your liberty। तो इन सब चीज़ों का आपको पूरी जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। और यही राइट्स हैं जो आपके रिप्रेजेंटेटिव ने, जिनको आप चुन के भेजते हो, वो प्रोटेक्शन उसको दिलवानी है और देनी है। ये नहीं करना है वो कास्ट है, वो कास्ट है, वो ये धर्म है, वो धर्म है, ये उनका काम नहीं है। धर्म आपका प्राइवेट है। धर्म से हम हर कोई अपने धर्म से मॉरल ऑब्लिगेशंस जो हैं, मॉरल सेंस जो है वो डिराइव करता है और वैल्यू करता है उसको। तो वो आपका इंटरनल मैटर है, प्राइवेट मैटर है। और कॉन्स्टिट्यूशन इसको रेगुलेट करता है। और हम सेकुलर कंसेप्ट के ऊपर जो है वो अपने स्टेट को चला रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है कि स्टेट जो है वो धर्म को अलग रखती है। स्टेट का कोई काम नहीं है धर्म के बीच में आना। हर एक धर्म की अपनी इंपॉर्टेंस है। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज। वी कैन नॉट से that dharma is bad, that dharma is good. No, every dharma is good according to their own faiths. तो अपने कैंडिडेट को आप देखो, स्टेट में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस को देखो, बीजेपी की परफॉर्मेंस को देखो। पिछले 10 साल से बीजेपी ने क्या किया है आप लोगों के लिए? अगर उसने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो उसको वोट दो। अगर आप आम आदमी के लिए बीजेपी ने कुछ अच्छा किया ही नहीं है तो आप उस बात को सोचो, एनालाइज करो कि क्या इसको वोट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। कांग्रेस तो पावर में है नहीं है, एनसीपी पावर में नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कुछ बुरा नहीं किया है, लोगों को डराया नहीं है, सेकुलर कंसेप्ट के ऊपर पूरा उन्होंने फॉलो किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी एक अच्छी पार्टी है। जब तक पावर में रही एनसी परफॉर्म्ड वेल, लोगों को तंग नहीं किया उन्होंने, लोगों के साथ रहे। तो इस तरह आप
इस पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे कंपैरेटिव उनकी स्टडी करवा कि कौन सी पार्टी अच्छी है। अगर एक पार्टी बहुत बुरी है तो हमें ये नहीं कि हमें उस पार्टी को फिर से वोट देके उसको फिर चुन के लाना है ताकि और बुरा हो आपके साथ। अब देखो उससे कम बुरी कौन है, उससे कम बुरी कौन है। क्या कांग्रेस ने जब रूल किया तो उसका रूल कैसा था? क्या लोग तंग थे? स्कैम्स को आप छोड़ दीजिए, स्कैम्स तो अब भी बहुत हो रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम बीजेपी ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि जो पैसा लिया गया है वो इलीगल है। तो स्कैम्स, लेकिन अब के स्कैम्स आपको पता इसलिए नहीं लग रहा कि जो आपका मीडिया है वो सारा कंट्रोल्ड है, वो गोदी मीडिया है। कांग्रेस के ज़माने में जब आपको स्कैम का पता चल जाता था तो उस वक्त मीडिया बहुत फ्री था कि हर बात जो है वो गवर्नमेंट की आपको बताता था, लोगों को बताता था। तो ये बेसिक डिफरेंस है बीजेपी के रूल में और कांग्रेस के रूल में। लोग तंग नहीं थे कांग्रेस के रूल में, लोग तंग हैं बीजेपी के रूल में। तो आपको ये कंपेयर करना है, अपनी अकल से कंपेयर करना है, वाइजली कंपेयर करना है और वोट देना है, इसको या उसको। एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी कोई तंग नहीं था। फारूक अब्दुल्ला was a very good chief minister. He never teased the people. He let live the people. और आज के दिन में आप देखिए क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने सामने रख के अपने वोट की वैल्यू करो और वोट करो। जो आने वाले जो इलेक्शंस हैं, 18 को इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर में शुरू हो रहा है, फिर 25 को है शायद, और फिर 1 अक्टूबर को है, फिर 4 अक्टूबर को रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को एनालाइज करके, अपने रिप्रेजेंटेटिव के कैरेक्टर को एनालाइज करके, उस जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट दे रहे हो उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके अपना वोट दीजिए। और अपना वोट जो है वो वेस्ट मत करिए, क्योंकि दिस इज़ such a power. If you misuse it, you will repent. Your generations will repent. I hope you will understand comprehensively what I explained and will follow. Thank you. Thank you very much.